Skincare. You need 10-step skincare routine. You need to apply toner or face mask. You need to go to a salon once every month to keep your healthy skin in check. You need to buy expensive products like celebs in order to have that glass skin. Everything is bullshit. Yeah, bullshit. This shit. In today's video, I'm Anna. I'm gonna be sharing the most simplified, science-based, logic-based skincare routine which you guys can follow in order to have a good looking healthy skin. But before we get into skincare, you need to take care of these three things because without it, you can't achieve what you're looking for. Step one is keep diet in check. Be healthy. Diet is directly related to healthy skin. Hell to those people who says food doesn't impact your skin. It does. As soon as you cut your sugar, processed foods, or fat foods, seeds, oil, you'll definitely see the result. Your skin will look much better than it has ever been. And there are various other benefits as well, like your gut health also improves when you get shredded in the process. That's an added bonus, right? Step two is your sleep. Get a good amount of 7 to 8 hours sleep because lack of sleep produces a stress hormone, which is cortisol, which increases your inflammation and the oil production, which is the cause of acne. So yeah, lack of sleep can cause acne. So have a good amount of 7 to 8 hours sleep. Make sure you go to bed at a consistent time. Don't vary too much. And also do some activities which de-stress yourself. Like because we have to reduce that bad boy cortisol, which is reason for our acne. So you can do some activities like going to gym, working out, getting sauna, doing yoga, meditation, anything like that. Step three is hygiene. Anything which is touching your face, make sure it's clean. Clean your bed sheets and towels or anything frequently with hot waters. And man, your damn phone. Yes, your phone. It has much more bacteria than your toilet seat. So yeah, talking to your girlfriend for hours, you're just keeping your phone like this. It has tons of bacteria. So make sure you wipe that also frequently. So now that everything is sorted, we can get back to our skincare routine, which you have come for. So there is a morning skincare routine and a night skincare routine. We'll get to both of them. Let's start with the morning skincare routine. Step one is to clean your face और इसके लिए आप यूज करोगे क्लेंजर और फेस वॉश. वन एट मॉर्निंग वन एट नाइट. अदरवाइज कुछ लोग को ये कंफ्यूजन होती है फेस वॉश यूज करें या क्लेंजर यूज करें. तो उसका मैं एकदम बेसिक लॉजिक समझाता हूँ. लेट्स से यू आर एन एथलीट, यू गो आउट एवरी डे, यू वर्क हार्ड, यू स्वेट अ लॉट, बहुत सारा डर्ट एंड पोल्यूशन तुम्हारे फेस पे लगेगा. सो यू नीड डीप क्लेंजिंग एंड द फेस वॉश इज द परफेक्ट वन. So अपने रूटीन के हिसाब से choose whatever fits you. Now don't go buying products without knowing your skin type. You can have one of these three skin types. Either it's oily, either it's combination, or either it's dry. So for knowing your skin type, wash your face with just water. And after an hour or so, check by tapping on your skin. If it's oily, then it's oily skin. अगर cheeks पे oily है and forehead पे dry है, then it's a combination one. And अगर ये completely dry है तो dry skin है. For dry to combination skin, you're gonna look for vitamin B3, E5, hyaluronic acids, things like that in your face wash or cleanser. I use this Cetaphil one, a great option, and this simple one and this CeraVe wala bhi अच्छा है. Link will be in description. For oily skin type, you're gonna look for things like salicylic acid and niacinamide in your face wash. For salicylic, ये Dermacoca and ये Minimalist वाला अच्छा है. And the best one for tan removal is this one from Requil. Second step is a serum. Like serum में you have to apply, if you're applying, different at daytime and different at night time. क्योंकि कुछ serum daytime के लिए बना है, कुछ it's safe to use at night. So why different in hours? क्योंकि daytime पे sun होता है. And believe me, skincare की major problems का reason is this sun. And therefore daytime पे तुम अपने प्रॉब्लम एक्टिव्स वाले सीरम मीन्स केमिकल एक्सफोलिएंट्स जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको तुम डे टाइम पे मत लगाना, वरना इट माइट रिएक्ट विद द सन एंड इट माइट कॉज इचिंग और पिंपल्स और एनीथिंग. यूज समथिंग लाइक विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड विच इज जिसका काम है बेसिकली हाइड्रेट करना और एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करना. तो तुम्हारी स्किन को एकदम फ्रेश रखेंगे थ्रू आउट द डे. थर्ड स्टेप इज आर मॉइस्चराइजर. Because after applying these, you need to hold it in your skin, and moisturizer does that pretty good. Once in morning, once at night तुम ये भी लगाओगे. Now while buying, keep in mind जितना light weight
मॉइस्चराइजर यूज करोगे उतना अच्छा है. Now step 4 is a sunscreen, which is the most important thing in the skincare routine that you guys forget. And in sunscreen, now it's important that you buy a mineral one, and उसमें भी there are two important factors which you need to look for while you're buying a sunscreen. First is SPF, which is the sun protecting factor. It's basically UV radiation, UVA, UVB से तुम्हें protect करता है sun के. 50 and above is good. And second is PA rating. PA triple plus and PA double plus would be enough because इनका काम होता है tanning protection. So PA plus plus and PA triple plus would be recommended. I use this one from Deconstruct. It's good. This is my second one. I've been using this for 1 year now and it's good. And मेरी स्किन पे अच्छे से सूट करता है. इट्स जेल सनस्क्रीन, मिनरल बेस्ड है. इन सब से तुमने अपना मॉर्निंग रूटीन तो एकदम सेट कर दिया. जब रात को वापस आते तब सेम स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करना है. थोड़े से चेंजेस है. नाइट स्किन केयर रूटीन में फर्स्ट जो सनस्क्रीन पूरे दिन तुम लगाते आ रहे हो, एक बार नहीं 2-3 बार लगाओगे, सो उसको हटाना भी ज़रूरी है. बिकॉज या थिंग्स विच प्रोटेक्ट्स यू ऑल्सो हार्म यू इफ नॉट टेकन केयर ऑफ अर्ली. क्योंकि सनस्क्रीन क्लॉग कर देते तुम्हारे पोर्स को, विच कैन कॉज एक्ने. या यू हर्ड इट राइट, एक्ने. सो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है फर्स्ट इज टू क्लेंज योर फेस. नाउ हियर तुम डीप क्लेंजिंग करोगे क्योंकि पूरे दिन बाहर बहुत काम किया तुमने. सो डीप क्लेंजिंग में फेस वॉश से पहले एक स्टेप होता है जो तुम्हें करना है, and which is using micellar water, which is oil cleansing. It's miscible in oil, so oil remove हो जाता है. तुम्हें अगर एक separate video चाहिए micellar water क्या होता है, because you need to know what you're applying to your face, right? Comment down and make separate video for that one as well. हम micellar water लगाया, उसके बाद same face wash जो तुमने और cleanser जो तुमने मॉर्निंग में लगाया था वो लगा लोगे. नेक्स्ट कम द सेकेंड पार्ट विच इज प्रॉब्लम्स, तुम्हारे फेस प्रॉब्लम्स के उसके हिसाब से तुम सीरम्स लगाओगे. सीरम्स हेयर विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड तो लगा दिया मॉर्निंग में. ना हेयर यू कैन हैव सीरम्स विच आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरपिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन. उसके लिए आई विल सजेस्ट रेटिनॉल फॉर एंटी एजिंग. दिस तुम अगर 20 एंड अबव हो तो लगाना, क्योंकि उससे पहले तो कोलेजन खुद ही तुम्हारे कोलेजन विच इज द थिंग विच कीप्स द इलास्टिसिटी ऑफ योर स्किन. रिंकल्स जो होते हैं तुम्हारी स्किन पे कोलेजन लेस होने की वजह से ही होते हैं. एंड अर्ली एज में लाइक यंग एज में तो कोलेजन अच्छा खासा प्रोड्यूस होगा, तो it would be waste of money to buy retinol at early age. Second thing you can apply if you have pimple problems, you can apply salicylic acid, which is the best one that is out there in terms of any acids to treat this pimple problems. अगर तुम्हें इसमें भी detailed video चाहिए कि कौन सी problem के लिए कौन सा acid और solution कौन सा वाला suitable रहेगा, comment down below and I'll make a separate video on that one as well. But तुम कुछ भी लगाओ एक्टिव वाले, रिमेंबर दैट पैच टेस्ट पहले कर लेना बिकॉज इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड इट माइट रिएक्ट विथ योर स्किन causing itching or inflammation or anything. And second thing you need to keep in mind is that तुम मत लगाओ if you're gonna go out the next morning to do some activities like playing football or any outdoor activity in general, because these are strong exfoliants. तुम्हारी new skin आएगी, it's not ready for that harsh sunlight which you're gonna get in the morning. So pre-plan it and then moisturizer. That's it, right? नहीं, स्किन फेस पे नहीं होती, पूरी बॉडी पे होती है. उसके लिए तुम्हें अच्छा बॉडी वॉश भी चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो माय फेवरेट इज दिस मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड. जनरली इंडियन स्किन टाइप कॉम्बिनेशन टू ऑयली पे होती है, तो सैलिसिलिक एसिड वर्क्स वेल. एंड आई ऑल्सो लिंक डाउन सम great options for the dry skin as well. So that's it for the video, and remember, I'm not a dermatologist by any means, so do your own research before you buy any product. And I'll catch you guys in the next video.